ज़ाहिर है मैच जीतना है, खुशी होगी। 3 में से 2 मैच जीत गए। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जिस तरह हम मैच जीते हैं, काफ़ी लंबे मार्जिन से जीते हैं। और हमारे आप टॉप ऑर्डर देख लें, मिडिल ऑर्डर देख लें, और बॉलिंग में भी सब ने बॉलिंग भी अच्छी की, आज फील्डिंग भी बड़ी अच्छी हुई। तो ओवरऑल मेन मकसद ये होता है कि मैच जीतने के साथ साथ जब आपके सारे प्लेयर्स छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस कर रही होती है ना, तो आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाता है आगे के मैचों के लिए। तो ये एक आज बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन था। वैसे तो बैट्समैन को ज़्यादा मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन स्टिल टीम में जो मैसेजिंग होती है वो आप भी देख रहे होते हैं। पहले मैच में हमने देखा कि कराची ने ऑल आउट अप्रोच के साथ 230 चेस कर लिया। दूसरे मैच में 200 पे भी वो सेम अप्रोच लग रही थी, लेकिन आज एक डिफरेंट किस्म की बैटिंग अप्रोच थी। तो क्या मैसेजिंग है कि आप बिल्कुल ही पावर हिटिंग वाली अप्रोच है, अकॉर्डिंग टू आप लोग कंडीशंस चीज़ों को देख रहे हैं? ब्रदर, आज की पिच डिफरेंट थी। पिछले 2 मैचों से आज की पिच डिफरेंट थी। हमारा जो मेन टारगेट था फर्स्ट इनिंग में, हमारा यही था कि हम किसी तरह से 170-180 करें, और जिसमें हम कामयाब हो गए थे क्योंकि आज पिच स्लो थी। जो जैसी पावर प्ले के बाद बॉल पुराना हो रहा था, तो बैक ऑफ लेंथ बॉल बैट पे अच्छा नहीं आ रहा था। तो ये हमें पता था। हमारी कोशिश यही थी बैटिंग फर्स्ट पे कि हम एटलीस्ट 170 प्लस करें, जिसमें हम कामयाब हुए। सेम बॉलिंग में भी हमारा यही था कि अगर हमारा पावर प्ले अच्छा चला गया तो हमें पता था कि बैक ऑफ लेंथ बॉल जो है ना वो बैट पे इतना अच्छा नहीं आ रहा। तो ओवरऑल सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हुई। वीर, आपका ताल्लुक भी कराची से है, आपने सारी क्रिकेट भी कराची में खेली है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि कराची में क्राउड नहीं आ रहा। व्हाट डू यू थिंक कि क्या रीजंस इसके हो सकते हैं? और आपकी फ्रेंचाइज क्योंकि होम टीम है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस क्राउड को लाने के लिए? बिकॉज अगर खाली ग्राउंड पे क्रिकेट होगी तो ना आपको मज़ा आएगा, ना ओवरसीज प्लेयर्स को मज़ा आएगा, ना PSL को एज अ ब्रांड जो है वो आगे जाने में ईजी होगी। फ़िलहाल तो हम क्राउड को लाने के लिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं और 2 मैचेस जीत गए। और हमारी कोशिश यही होगी। देखें, अगर कोई भी फ्रेंचाइज है ना, अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 सालों में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो उसकी वजह से भी जो है वो क्राउड मायूस हो जाती है। और मेरे ख्याल से अभी जैसे हमने स्टार्ट लिया है, 3 मैचों में 2 मैचेस हम जीत गए, तो होपफुली मैं इंशाल्लाह ये है कि नेक्स्ट मैचेस में जो है उम्मीद है कि क्राउड आएगी इंशाल्लाह। मीरू भाई, आज सऊद शकील के साथ आपने अपनी क्रिकेट खेली है, दोनों साथ कराची में। ऐसा लग रहा था आज सऊद को आउट करने के मूड में नहीं था कराची किंग्स, क्योंकि आप लोगों को शायद पता था कि वो नहीं कर पा रहे, आप दूसरे एंड से गए। क्या प्लानिंग थी उनके अगेंस्ट पर्टिकुलरली? और कुछ के इतना मुश्किल था कि क्वेटा, जिसको ज़्यादा सऊद कराची में एक्सपीरियंस रखते हैं, बिल्कुल टच भी नजर नहीं आया। देखें, अब अगर अभी मैं प्लानिंग बता दूंगा, क्वेटा से अगला मैच भी तो है हमारा। देखें, एक प्लेयर अगर एक तरफ खड़ा और अगली तरफ विकेटें गिरती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको अकेले रन करना, मैच जितवाना। मेरे ख्याल से आज साउथ के साथ भी यही हुआ। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले एंड से विकेटें गिर रही थी शायद। तो लास्ट क्वेश्चन आपका न्यू कैप्टन के अंदर आप लोग खेल रहे हैं, तो डेविड वार्नर की कैप्टनसी आपको कैसे लगी? जी, बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि एज अ कैप्टन वो प्लेयर्स को किस तरह बैक करता है और ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसे रखता है और प्लेयर्स को ट्रस्ट कितना करता है। तो ये चीज़ें हमें चाहिए होती है। और स्पेशली जब टीम अच्छा नहीं कर रही होती, वहाँ पे जो है वो कैप्टन का बड़ा रोल होता है। टीम जब अच्छा करती है तो मेरा ख्याल से प्लेयर ख़ुद इतना खुश होता है, उसको कैप्टन की तरफ से कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं होती। बीच में जो हम लास्ट मैच हारे हैं, तो स्टिल वो बॉलर्स को भी बैक कर रहे थे, बैट्समैन को भी बैक कर रहे थे, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। एक टीम के लिए यही चीज़ चाहिए होती है। और आपने इस मैच में उसकी रिफ्लेक्शन देख भी ली होगी। तो मेरे ख्याल से डेविड वार्नर एक अच्छे कप्तान भी हैं, लीडर भी हैं और एक बड़े अच्छे टीम मैन भी हैं। लास्ट क्वेश्चन, टीम कॉम्बिनेशन जो है कराची किंग्स का ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आटम मिलने की जगह आप आ गए, मोहम्मद नबी बीच में आ गए जो विकेट ले रहे हैं, और इसके अलावा भी आमिर जमाल आ गए। तो आप समझते हैं कि ये टीम कॉम्बिनेशन है जो कि विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसको कंटिन्यू रखेंगे या फिर इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं? केन विलियमसन को भी आना है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में यही होता है कि बड़ी मुश्किल से टीम कॉम्बिनेशन बनता है। कुछ मैचेस लगते हैं, 4-5 मैचेस लगते हैं। और मेरे ख्याल से अभी तो हम इस टीम कॉम्बिनेशन के साथ एक मैच जीते हैं।
होपफुली आगे भी मैचेस जीतेंगे. आज टीम ओवरऑल बड़ा अच्छा खेली है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन वाकई लग रहा था. होपफुली अगर हमारी इस तरह की 2-3 जीत आएगी तो टीम कॉम्बिनेशन खुद ब खुद अच्छी बन जाती है. देखिए जब टीम हारती है ना तो अच्छे से अच्छे प्लेयर्स का भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता, और जब जीतना शुरू कर देती है तो खुद ब खुद जो प्लेयर्स होते हैं ना उनका आपस में रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं और टीम भी जो है ना वो अच्छा खेलती है. Sean, tell me what went wrong for Quetta Gladiators today, because the target was not too far away from your reach, and tell me also about the conditions in the middle overs of the wicket. How did you feel about this Karachi wicket in the middle overs? Yeah, firstly I think the conditions tonight. Good. Yeah, sorry, I think the conditions tonight, I think it was the third time they played on this wicket, so we knew par score typically here is up around 190, 200, but I think the way the wicket played tonight and the opportunities that we created with the ball, I think par score was a lot less than that, and even what they ended up getting. I think we dropped some catches and we had some missed fields and a run out there. I think that run out was pretty key. That was James Vince. I can't remember how many runs he was on, but I think if you get to bowl at new batters on the slow surface like that compared to guys that get in and bat the way James did tonight, it's a completely different fixture. And then, as I just mentioned, getting to bowl at new batters, we lost some wickets and didn't really get that partnership going. So they always got to bowl at new batters, which made it tough. So some improvements. We've got about a week off now, so I think we've got some improvements to make across all three facets. With the bat, with the ball, and in the field. Sean, I have a couple of questions for you. First, today you bowled to James Wind, your teammates in Sydney Sixers played together a lot. So how it was bowling to him at franchise level? And the second one, talk us through your batting approach. We have seen you superb 100 for Saen around 30 balls whenever you get a chance to bat up the order. So how enjoyable batting for you, and you just focus on your batting when you get a chance? Yeah. Personally, I have a lot of respect for Vince. I think he's one of the best batters going around on the T20 circuit at the moment, and not only that, he's a great team man. I love having him at the Sixers. He really gets the group together, and you can see that he's having a pretty similar effect for the Karachi team. So, like, that wicket was tough tonight. I definitely thought we could have bowled better, but I think James batted brilliantly on that wicket. Personally, I felt like I bowled pretty well to him, but the wicket suited the bowlers there towards the end. Once that ball was old, you could see I was bowling a lot of short off-cutters that weren't really getting to him, and there was just no pace in it for him to hit to the fence. So, credit to him. I think he got them up well above a par score on that surface. And then with my batting, I'm trying to plug that hole in the middle of my bat. I didn't bat very well tonight at all. So, but by the time I went out to bat, the game had sort of, it was a long shot to get home by the time I walked out the bat. So Saud and I just said, let's get together for a couple of overs and just see where we get, if we can get it to the 18th over. I know, we needed probably 15s, I think, at that stage on what was a tough wicket. Some balls off the spin. I tried to play a sweep shot and it rolled straight on the carpet. Tried to clip one through the leg side, it bounced and spun past off stump. So, I think I need to open my eyes a bit more when I bat next fixture. So, plenty to work on. So, please, nice. Sean, two of the most experienced players in your dugout, your captain Saud Shakeel, he has a lot of experience playing in Karachi. Sarfraz Ahmed, obviously he's not the player, but team director, obviously his experience is also valuable for you guys, especially in these conditions. But your batting looked clueless. Saud remained till the end, he remained not out, but there was no as such plan which was visible to us, and you just fell apart. What was the reason? What was the planning, and what was going around in the mind of your batters? Well, I think when the wickets play like that, when they're on the slower side, you have to make use of the new ball in the power play when there's only two fielders out. So no, I think you can excuse the way the aggression in the power play, trying to get ahead of the run rate, because it's going to slow down through the middle. They've got some quality spinners. Obviously, Nabi bowled brilliantly tonight. And showed his experience. So I was always going to slow up and be tough through the middle, but I definitely think we need to tighten that up as a batting group. Like I said, on those sorts of wickets, from a bowling point of view, if you're bowling at set batsmen, it's a whole different ball game compared to when you get to keep bowling at new batters. And we kept
giving them chances to take catches. They held their catches and fielded brilliantly as well compared to us, and they always got to bowl at new batters, which personally I found it quite tough out there to bat. So yeah, I mean there'll be some conversations we've got about a week off now, so but we've also got an opportunity to respond. So, and I'm pretty confident the guys can do that. As you said, we've got some experience in the shed. So yeah, it's just an opportunity to bounce back and put our best foot forward. Last question. Suraj Maya, did you feel strained like the way Saud Shakeel played today? I mean, 33 runs on 40 balls. There was no real intent to win this game. Well, to be fair, mate, he didn't face that many balls. He batted for the whole innings. So the guys, I really struggled getting him on strike. He's obviously a great player, a spin, and I couldn't get a single and get him on strike. So we could rotate the strike and get a partnership together and hopefully pick up some boundaries against the quick bowlers. So whilst it doesn't look good on paper, whatever he got off 40 balls, he didn't get much of the strike. We didn't get any momentum throughout our innings because we kept losing wickets. So I wouldn't judge him on that. He's a fantastic player, and it was bloody tough conditions tonight, and the guys around him as a batting unit, no individuals, we just didn't get together as a partnership out there and put any pressure back on the opposition.